हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश कुमार। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का 4th चैप्टर, दैट इज़ एग्रीकल्चर। और ज्योग्राफी का ये चैप्टर है, दैट इज़ एग्रीकल्चर। क्लियर? सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. So first of all, what is the agriculture and what are major characteristics of Indian agriculture? So first one, India is all we know that India is a agricultural country, and Indian economy that is totally dominated by the agriculture, and this agriculture is mainly engaged with the primary activity. So it is the subsector of the primary sector, and under the primary sector, agriculture is there, mining is there, hunting is there, gathering is there, animal rearing is there, and fishing is there. So these are the major subsector of the primary sector, and near about 2/3 of its Indian population that is engaged with the agriculture, and according to 2011 census, near about 62% people are living in the rural areas, and the main activity of these people, that is the agriculture. So all we know that near about 50% of the population, more than 50% of the population is doing the agriculture activity of the agriculture. That's why Indian economy is totally dominated by the agriculture, and Indian people that is engaged with the agricultural activity, and in the Indian agriculture, that is the main important employment sector in our country. Clear? So it is the primary activity. So for more characteristics, we are going to discuss the agriculture topic with the help of these images. So Indian agriculture, all we know that that is the mainly dominated by the monsoon, or the depend over the rainfall. So what is the agriculture? So agriculture is a primary activity and closely related to the natural environment, already we have discussed. Then agriculture is also called as the farming. Farming means cultivation of crops, and husbandry means rearing of animals. Clear? So it is in the Indian agriculture or agriculture, two main works are going to happened. The first one, the rearing of animals, and second one is the cultivation of crops. And the third important point, so the term agriculture that has been derived from the Latin language word, and that comes from the two word, first one ager, and second one is the cultura. So ager means field, and cultura means cultivation. So it simply refers to the cultivation of the crops or cultivation of the fields. Clear? With the help of crops, so that is called as the agriculture. And what is the definition? So simply we can say that the agriculture, that is an art and science. अब ये आर्ट क्यों है? बिकॉज ऑफ growing crops. And why it is called as the science? Because of multiple techniques. Clear? Multiple HYV seeds, fertilizers has been utilized in the agricultural, that's why it is called as a science. So it is an art and science. So the science or practice of farming, including cultivation of the soil for the growing crops and rearing of animals. So simply we can write as it is an art and science of growing crops and rearing of animal. Clear? The next topic after the introduction of the agriculture, the next topic is the types of the farming. So all we know that the agriculture is an old economic activity in our country, and with the march of the time, the technology has been changed, and also the methods of the Indian agriculture has been changed from time to time. So first one, that is the types of the farming, that is the primitive subsistence farming. And primitive means old मतलब पुराना. एक और word इसके लिए है, that is the traditional. क्लियर? ट्रेडिशनल का मतलब भी होता है दैट इज़ द ओल्ड. सो दोनों एक दूसरे के साइनोनिम वर्ड है, ओल्ड एंड ट्रेडिशनल. सो इट इज़ द ओल्ड farming technique in our country. So primitive subsistence farming, so it is again still practiced in our country. So in few areas, that is a mountainous area, these farming has been practiced, and it is called as the primitive subsistence farming because small patches of land has been used with the help of प्रिमिटिव टूल्स, पुराने औजारों के साथ यहाँ पे खेती की जाती है. एंड कम्युनिटी लेबर मीन्स फैमिली लेबर, वहाँ पे फैमिली लेबर यूज़ की जाती है, और स्मॉल पैचेस होंगे, एंड देर इज़ नो पॉपुलेशन प्रेशर ओवर द लैंड. क्लियर? दिस टाइप्स ऑफ फार्मिंग इज टोटली डिपेंड ओवर द मानसून. इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो फार्मिंग है टोटली रेनफॉल के ऊपर डिपेंड है, और इसमें जो नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज़ टोटली यूज. If there is no utilization of the HYV seeds and chemical fertilizer, pesticide, insecticide, the agriculture is totally depend over the natural fertility of the soil and suitably of the
other environment condition. Clear? So these are two are the main important characteristics. It is also known as a slash and burn agriculture. What is a slash and burn agriculture? Farmer clears a patch of land, एक particular area को वो क्या करते हैं, clear करते हैं, जैसा कि इस इमेज में दिखाएं. Then एंड प्रोड्यूस द सीरियल एंड अदर क्रॉप्स. उसके बाद जब वो उस पर्टिकुलर पैच को क्लियर करेंगे जहाँ पे फॉरेस्ट होंगे, उसके बाद उसको बर्न करेंगे, एंड आफ्टर बर्निंग दे विल प्रोड्यूस द सीरियल एंड फूड क्रॉप्स टू सस्टेन देयर फैमिली. अपने फैमिली की जो जीविका है उसको चलाने के लिए दे प्रोड्यूस द क्रॉप्स. व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज, जब उस एरिया की पर्टिकुलर एरिया की सॉइल फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, दे मूव टूवर्ड द अनदर पैच ऑफ लैंड. And this activity, this agriculture slash and burn agriculture is known by the name of the shifting agriculture. Clear? Important name है shifting agriculture. Name आपने पहले भी पढ़ा होगा 6 to 8 में, कहीं ना कहीं ये टॉपिक पढ़ा होगा. That is shifting agriculture. And this type of shifting allows nature to replenish the fertility. मतलब जब fertility लो हो जाती है किसी पर्टिकुलर पैच ऑफ लैंड की, तो वो मूव कर जाते हैं टूवर्ड द अनदर पीस ऑफ लैंड, और नेचर को क्या मिल जाता है, टाइम मिल जाता है उस पर्टिकुलर फर्टिलिटी को रिप्लेनिश करने के लिए. क्लियर? देन लैंड प्रोडक्टिविटी इज़ वेरी लो, important point. Then and farmer does not use any type of fertilizer and other modern inputs, and it is known by the different names in our country and the world. So in our name झूमिंग in northeastern states like Assam, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, इसको झूमिंग के नाम से जानते हैं. Then in पामलाऊ in Manipur and दीपा in the Bastar डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ एंड अंडमान एंड निकोबार. और पूरे वर्ल्ड में इसको किन किन नेम से जाना जाता है, मिल्पा. मिल्पा मैक्सिको. अब याद करने का तरीका है, एम फॉर मिल्पा एंड एम फॉर मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका में. कोनुको, कोनुको कहाँ पे है, ब्राज़ील में. रोका, रोका मतलब दैट इज़ इन ब्राज़ील, सॉरी कोनिका इन वेनेजुएला एंड रोका इन ब्राज़ील. मसौल दैट इज़ सेंट्रल अफ्रीका. लडांग इज़ इन इंडोनेशिया एंड रे इन वियतनाम. तो इम्पोर्टेंट नेम है ये, अदर नेम है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर्स के, तो इनके नोट्स बनाएंगे और इनको लर्न करेंगे. क्लियर? देन एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है कि रिंझा जो है वो अपनी फैमिली के साथ एक स्मॉल विलेज में रहती है असम के एरिया में. सी एन्जॉय वॉचिंग हर फैमिली मेम्बर क्लियरिंग द forest and then burning that forest and doing the agriculture over that area. So that is totally depicting the picture of the shifting agriculture. Clear? So we will discuss these shifting agriculture with the help of these images. So this is the picture of the shifting agriculture or subsistence primitive agriculture, in which people are using the oldest method of agriculture. Clear? This is the shifting agriculture, the people burning the forest and doing the agriculture. Again this one is a smoke condition is there. So this is a negative impact of the shifting agriculture, that harming the environment and producing the air pollution. Clear? And this is the burning activity. This is the diagram of the shifting agriculture. Primary or secondary forest, they grow over the area, then people come here and they cut and burn the tree, and then they do the agriculture for 6 or 7 year period. When the fertility has been decreased, they move to the secondary vegetation or the secondary forest. So this is the process of the shifting agriculture. This is the what is the झूमिंग एग्रीकल्चर. अब झूमिंग एग्रीकल्चर जो है इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बोलते हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है, इन रीजन में. तो इट इज़ एन इंडिजीनियस कल्टिवेशन. इंडिजीनियस मीन्स सिंगल, और जो हमारे लोकल एरियाज़ में ग्रो होती है. मेथड इन एग्रीकल्चर, फार्मर स्लैश एंड बर्न अ पैच ऑफ लैंड एंड स्टार्ट ग्रोइंग द food crops. When the soil fertility declines, they shift to the another place, burn jungle again. Clear? So that is the झूमिंग agriculture. Different types of the names. So first one Ladang, that is in Indonesia, Malaysia. Then Ray, Vietnam. Honuho, Philippines. And India में बेवार, दिया, दीपा, एरका, झूम, कुमारी, पेंडा, पोथू and पोडू, that is in India. Clear? So these are the shifting agriculture and primitive subsistence agriculture. The next second farming is intensive subsistence farming. So intensive subsistence farming is practiced in the areas of high population pressure. तो यहाँ पे क्या होगा, हाई पॉपुलेशन प्रेशर होगा लैंड के ऊपर. क्लियर? एंड इट इज़ लेबर इंटेंसिव, मतलब यहाँ पे लेबर ज़्यादा यूज़ होगी. तो दोनों डिफरेंस है, किस में लेबर कम यूज़ होती है, किस में, सब्सिस्टेंस में मीन्स प्रिमिटिव में, और वहाँ पे
लैंड पे पॉपुलेशन प्रेशर क्या होगा, कम होगा एज कम्पेयर टू इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। उसके बाद विद हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स मीन्स केमिकल फर्टिलाइजर यूजिंग इन हाई क्वांटिटी एंड इरीगेशन आर यूज फॉर ऑब्टेनिंग हाई प्रोडक्शन। सो मीन्स यहाँ पे हाई प्रोडक्शन मेन एम होगा, वहाँ पे एम क्या था, ओनली सेल्फ कंजम्पशन, नॉट टू सेल इन द मार्केट, और वहाँ पे प्रोडक्शन भी क्या होगी, कम होगी। वहाँ पे देर इन द प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग देर वॉज नो यूज ऑफ द chemical fertilizers and HYV seeds, while in intensive subsistence farming people are using the HYV seeds chemical fertilizer. Clear? So there is again one important point under this, the right of inheritance. right of inheritance क्या है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक पर्सन है, उसके पास 4 एकड़ लैंड है, कितनी है, 4 हेक्टेयर लैंड। क्लियर? 4 हेक्टेयर लैंड है। उसके बाद उसके 2 सन होते हैं। क्लियर? आफ्टर हिज 2 सन्स, जब वो उस लैंड को डिवाइड करेगा विद इन द 2 सन, तो एक के पास कितनी जाएगी, 2 हेक्टेयर, और दूसरे के पास भी क्या जाएगी, 2 हेक्टेयर। तो ये जो इन दोनों सन को उसके फादर की प्रॉपर्टी मिली 2 हेक्टेयर, ये किस राइट के अगेंस्ट मिली, दैट इज कॉल्ड एज द राइट ऑफ इनहेरिटेंस। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो व्हाट इज द राइट ऑफ इनहेरिटेंस, लीडिंग टू द डिवीजन ऑफ लैंड अमंग सक्सेसिव जनरेशन। मतलब लैंड की क्या करना है, डिवीजन करना है अमंग सक्सेसिव जनरेशन की। हैज़ रेंडर्ड लैंड होल्डिंग साइज अनइकोनॉमिकल, द फार्मर कंटिन्यू टू टेक मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द लिमिटेड लैंड in the absence of the alternative source of livelihood. Clear? So that is the right of inheritance, and the main purpose is to more and more production, so that is called as the intensive subsistence farming. Then after the intensive subsistence farming, next topic is commercial farming. So as the commercial means, commerce means money. So to increase their profit, the production is the main. What are the main objectives? More production, more skilled labor has been used. Clear? And earn more and more profit. Clear? And cheap labor. cheap labor mean कम पैसों में उनको लेबर मिले, एंड वो भी क्या, स्किल्ड लेबर होनी चाहिए. सो व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस इज using the high doses of modern inputs in which HYV seeds, chemical fertilizer, insecticide and pesticide are used. And HYV seeds, chemical fertilizer, insecticide, pesticides, they are using. Why? Because of obtained higher productivity. The main objective is to higher production. The degree of commercialization of agriculture vary from region to region. Commercialization की डिग्री भी क्या होगी, वेरी करेगी from one region to another region, and it depend according to the that is the fertility of that particular patch of land. For example, rice is a commercial crops in Haryana and Punjab, but in Odisha it is a subsistence crops. Understand point? Then the next point important farming is plantation farming. So what is the plantation farming? Single crop is grown over large area. Single crop is grown over large area. So this is the definition of the plantation farming. Single crop is grown over large area. Clear? So it is also a type of commercial farming. In this farming, single crop is grown over a large area. This plantation has an interface of agriculture and industry. Plantation cover large tracts of land using capital inputs. Capital inputs भी high होगी. Clear? With the help of migrant labor. Labor भी क्या होगी, cheap होगी and skilled होगी. All the produce is used as raw material to respective industry. अब उसके जितना भी plantation crops का प्रोडक्शन होगी, दैट इज यूटिलाइज एज द रॉ मटेरियल फॉर द सेकेंडरी एक्टिविटी. और कौन कौन सी प्लांटेशन क्रॉप्स हैं इंडिया में? टी है, कॉफ़ी है, रबड़ है, शुगर केन है एंड बनाना. क्लियर? दीज आर द इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स इन आर कंट्री. क्लियर? सो दीज आर क्लियर. सो फ्यू points under the commercial farming. So this is mechanization of farming. Modern techniques has been used and modern machineries, threshers and harvest machine has been used. Clear? So this is the commercial farming. Machine is there, HYV seeds is there, proper daily maintenance, and the HYV seeds, insecticide, pesticides have been used in the commercial farming. Tractors have been used. So what are the characteristics? In this farming, high doses of modern inputs like HYV seeds, chemical fertilizer, insecticide, pesticides,
had been used for higher productivity. Degree of commercialization, for example, rice is a, this is the degree of commercialization, vary from region to region. So rice is the main crops in Punjab and Haryana, commercial crops, while in Odisha it is a subsistence crops. Clear? So difference between the primitive and the subsistence farming. So what is the difference? This type of primitive subsistence, this types of farming is practiced in the small patches of land, and this is the large patches of this is small patches of land again, and with the help of primitive tools and hoe, dow and digging sticks. This type of farming is practices again in small patches of land with the help of modern tools. Land productivity under this type is very low, while here is land productivity is very high. This type of agriculture is used practiced in the northeastern part of India, while it is used in the northern plain of our country. Then subsistence versus commercial farming. So what is the subsistence and commercial farming? So 5 principle under this. Purpose of farming. So subsistence में क्या है? For consumption, self consumption, while in commercial में for sale mean market oriented. देन परसेंटेज ऑफ फार्मर्स इन द लेबर फोर्स. अब सब्सिस्टेंस में लेबर कितनी यूज़ होगी? नियर अबाउट लेबर फोर्स 50%, बिकॉज 50%, and while in the commercialization that is only 5% labor has been used and other work is done by the machines, because technological innovations are very high. Use of machineries, more farmers, subsistence में use of more manual labor and power and tools, while in the commercial small farmers होंगे, then more small number of farmers, more machines and more new technology. and farm size, subsistence में फार्म साइज़ क्या होगा? स्मॉल. लैंड तो ज़्यादा होगी बट वो स्मॉल, फार्म साइज़ क्या होगा? स्मॉल होगा. बट कमर्शियल फार्मिंग में फार्म साइज़ लार्ज होगा, नियर अबाउट 449 एकड़ का. रिलेशनशिप टू द फार्मिंग टू अदर बिजनेस. तो सब्सिस्टेंस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, वाइल कमर्शियल में क्लोजली रिलेटेड टू अदर बिजनेस कॉल्ड एज द एग्री बिजनेस. क्लियर? सो दीज आर द few points under the subsistence and the commercial farming. And the plantation farming that comes under the commercial farming. Clear? So it is a subtype of the commercial farming. So today in this lecture we have discussed the plantation agriculture, plantation farming, commercial farming, intensive subsistence farming, and primitive subsistence farming, slash and burn, shifting agriculture, different names, types of farming, and what is the agriculture, and introduction of the agriculture. And tomorrow we will start the next topic, that is the cropping pattern of farming in our country. Thank you.